Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam, all glories to Srila Prabhupada. We are reading Teachings of Lord Chaitanya, Chapter 2, and we were talking about Sanatan Goswami. So the chapter is titled Sanatan Goswami. तो अभी हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे वो he came into association with Chaitanya Mahaprabhu. So इसको finish करते हैं आज. Please let me know if you had any questions from the previous video. But so far it's a story. We're just discussing the life of Sanatan Goswami. So आपको याद होगा कि we have reached Sanatan Goswami is just about to reach to see Chaitanya Mahaprabhu. Let me say a quick prayers. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so आपको याद होगा कि सनातन गोस्वामी ऐसे छुपते छुपाते हुए जंगल में से हिल्स में से आ रहे थे and he was he let his servant go with one gold coin and without any money, and he just had a very comfortable, excellent blanket that was given to him by his brother-in-law on the way, and he was just with that possession he was going alone now to see Chaitanya Mahaprabhu in Banaras. So let's read further. When he reached Banaras, Sanatan learned that the Lord was there and he became overjoyed. He was informed by the people that the Lord was staying at the house of Chandrasekhar, and Sanatan went there. Although Chaitanya Mahaprabhu was inside the house, he could understand that Sanatan had arrived at the door, and he asked Chandrasekhar to call in the man who was sitting there. He is a Vaishnava, a great devotee of the Lord, Chaitanya Mahaprabhu said. So what is happening? So Sanatan Goswami has gone to see Chandrasekhar, gone to the house of Chandrasekhar, right? Where Chaitanya Mahaprabhu is staying. And now Sanatan has not gone inside yet. He's waiting outside. He's debating whether he should go in or not. He's waiting at the door. He's very nervous. He's waiting at the door. And inside, Chaitanya Mahaprabhu got the idea that there is a Vaishnava, a great devotee of the Lord, waiting outside the door. He told Chandrasekhar, go and see who is outside. I know that there is a great devotee, a Vaishnava, waiting outside at your door. Chandrasekhar came out to see the man, but he saw no Vaishnava at the door. He saw only a man who appeared to be a Muslim mendicant, because Sanatan Goswami had probably beard and long hair and everything, so he was not in the garb of a Vaishnava, right? He was not dressed like a Vaishnav sannyasi or brahmachari or anything. He was probably in the Muslim clothes. And so he saw a Muslim mendicant. And so Chandrasekhar was confused. And he saw him at the door, but not any Vaishnav devotee that Chaitanya Mahaprabhu was talking about. The Lord then asked to see the mendicant. And when Sanatan entered the courtyard, Lord Chaitanya hurriedly came out to receive him and embraced him. When the Lord embraced him, Sanatan became overwhelmed with spiritual ecstasy. And he said, "My dear Lord, please do not touch me." But they embraced each other and began to cry. Seeing Sanatan and Lord Chaitanya acting thus, Chandrasekhar was struck with wonder. Chaitanya Mahaprabhu then asked Sanatan to sit down with him on a bench. The Lord was touching the body of Sanatan with his hand, and again Sanatan asked him, "My dear Lord, please do not touch me." "I am touching you just for my purification," the Lord replied, "for you are a great devotee. By your devotional service, you can deliver the whole universe and enable everyone to go back to Godhead." So even though he was in Muslim dress, when he came, Chaitanya Mahaprabhu immediately knew that this is a great Vaishnava devotee, and he embraced him. But Sanatan Goswami is feeling little awkward. Why? Why is he feeling bad when Chaitanya Mahaprabhu is embracing him? Why does he keep saying, "Please do not touch me"?
because he feels that he's very polluted. He's been serving, Muslim ruler who is a meat eater and who has committed so many crimes and hunting animals and whatnot. So he does not feel um, very, he feels very contaminated and feels that Chaitanya Mahaprabhu should not touch him. So Lord replied that I'm just touching you for my purification. Why? Because you're a great devotee. And with your devotional service, you can deliver the whole universe. And everyone can go back to Godhead by your devotional service. That you are so pure that everyone can be delivered. So what to speak of, why do you think you're impure? So Chaitanya Mahaprabhu understands Sanatana Goswami's mood. The Lord then quoted a nice verse from the Vedic literature, stating that a person who is a devotee of Lord Krishna and is 100% engaged in devotional service is far better than a Brahmana who is versed in all the Vedic literatures but who does not engage in the devotional service of the Lord. Because the devotee carries the Supreme Lord within his heart. He can purify every place and everything, right? So Mahaprabhu quoted a verse to Sanatana Goswami and he said, somebody who is a devotee and is 100% engaged in devotional service is better than the so-called Brahman, right? Because those Brahmanas like Jat Gosais or people that are just born in Brahman families, Dvij Bandhus, right? They're called Dvij Bandhus, Jat Gosais, or Samarth Brahmanas that are born in the Brahman family, but actually they do not have any qualification of the Brahmanas at all. So, and even if they do have some qualifications and they may be glorifying Vedic literature and well versed in Vedic literature, right? But they are not glorifying Krishna. They are not engaged in a service, the loving transcendental service of the Lord, because service supersedes all knowledge or birth or any material qualifications, right? So knowledge, well versed in Vedic knowledge is after all just a material qualification, but the loving service of the Lord is transcendental. So somebody who's not engaged in the loving devotional service of the Lord is not the best. And actually Krishna says this in Bhagavad Gita, right? In 8th chapter 8.28, that whatever fruit can be obtained by studying Vedas, by doing charities, by doing pious activities, by getting the knowledge, by acquiring knowledge, can be obtained much more by a devotee, right? I'm forgetting the verse a little, but it goes like this: Vedeshu daneshu tapsu chaiva. It's something like that whatever fall can be obtained by all of these can be obtained much better by a devotee. Let me pull that up and we can read that. Vedeshu yagyeshu tapsu chaiva daneshu yat punya phalam pradishtam atteti tat sarvam idam viditva yogi param sthanam apeti chadyam. That by performing devotional service he attains all these and more and reaches the supreme eternal abode. So such a person can deliver anybody, can purify every place and everything. So you don't need to feel that you're impure, because devotee carries, we have talked about this many times, a Vaishnava or a devotee carries Krishna in his heart, and Krishna does not live in an impure place, right? Krishna lives always in Vrindavan. So that person's heart is like Vrindavan where Krishna lives, and Vrindavan is pure. And so that person also has the potency to purify everything, every place, wherever he goes. So this is the way Prabhupada was able to purify such an impure place like USA, such impure people that were meat eaters and drinking and using drugs and whatnot. So that person has the potency to purify every place and everything, right? Because he's 100% engaged in Krishna's service. The Vedic literature also states that the Supreme Personality of Godhead does not recognize a non-devotee who is very learned in all division of the Vedas, but
He likes a devotee even if he was born in a low family. If one offers charity to a Brahmana who is not a devotee, the Lord does not accept it. But if something is offered to a devotee, the Lord accepts. In other words, whatever a person wishes to offer the Lord may be given to his devotees. So this is very important. ये बहुत important बात बोली गई है यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला है कि वैदिक लिटरेचर में भी ये बात कंफर्म की गई है कि कृष्णा does not recognize a Brahman who is non-devotee. Okay, so we should not confuse a Brahmana with a devotee. All Brahmanas are not devotees, right? So he does not recognize a Brahmana who is a non-devotee, right? So you may think, okay, I'm feeding 100 Brahmanas. Like right now, Pitri Paksha is going on, right? And it is considered very pious. It delivers you of so many sins, gives you so many benedictions to feed Vaishnavas. But if you just feed some Brahmanas who may not be devotees, who may be learned in the Vedas, but are not engaged in service of the Lord, then Krishna is really not pleased. But if you just do the service of a devotee, जैसे कि किसी pure devotee की या spiritual master की या Vaishnavas, they're all the same, right? If you do anything for them, then Krishna will accept that service. So he likes a devotee even if he's born in a low family. So family has nothing to do with being a Vaishnava or a Brahman. Your birth has nothing to do with being a Brahmana, right? So this is very important to understand, and Bhagavatam actually keeps saying this many, many, many times. So whatever you wish to give to the Lord, you may give to his devotees, right? Chaitanya Mahaprabhu also quoted Srimad Bhagavatam to the effect that even if a Brahman was born in a high family and is qualified with the 12 Brahmanical qualities, he is lower than the lowest of the low if he is not a devotee of the Supreme Lord. Although a devotee may have been born in a Chandal or dog-eater family, by devotional service he can purify his whole family for 100 generations past and future, whereas a proud Brahmana cannot purify even himself. So Chaitanya Mahaprabhu ने एक श्रीमद् भागवतम से भी एक वर्स कोट की जिसमें यही सेम बात लिखी गई है कि अगर ब्राह्मण चाहे हाई फैमिली में है, ब्राह्मणिकल फैमिली में है, उसमें कितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, बट वो फिर भी लो है अगर वो डिवोशनल सर्विस में नहीं एंगेज्ड. और अगर वो डिवोटी है कोई, लेकिन चाहे वो चांडाल फैमिली से भी हो, डॉग ईटर मलेच फैमिली से भी हो, लेकिन वो अपनी सारी फैमिली को प्यूरिफाई कर सकता है 100 जनरेशंस. तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने हरि भक्ति सुदोदया में से भी एक वर्स कोट की. तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, राइट, कि प्राउड ब्राह्मण जो सिर्फ लर्नेड है वैदिक नॉलेज में, वो अपने आप को भी प्योरीफाई नहीं कर सकता, और लो फैमिली में बॉर्न डिवोटी जो है वो डिवोशनल सर्विस से अपनी 100 जनरेशन आगे पीछे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को भी डिलीवर कर सकता है. अक्षणो फलम त्वाद्रा दर्शनम ही तनो फलम त्वादृशा गत्र संगा जीवा फलम त्वदृशा कीर्तनम ही सुदुर्लभा Bhagavata hi loke. O devotee of the Lord, to see you is the perfection of the eyes. To touch your body is the perfection of bodily activities. And to glorify your qualities is the perfection of the tongue. For it is very rare to find a pure devotee like you. So you know that it is very rare to find a pure devotee, right? So that is how Sanatana Goswami को glorify कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि O devotee of the Lord, आपको देखना is the perfection of the eyes, आपकी बॉडी को टच करना is the perfection of the bodily activities, आपको glorify करना is the perfection of the tongue. क्योंकि it is very rare to find a pure devotee like you. So he is removing all doubts that Sanatana Goswami might have about himself. Next, the Lord told Sanatan, Krishna is very merciful and is the deliverer of fallen souls. He has saved you from Maharorva. Srimad Bhagavatam describes Maharorva as a hell meant for persons engaged in killing animals. For it is stated that butchers and animal eaters go to that hell. I do not know the mercy of Krishna, Sanatan replied, but I can understand that your mercy upon me is causeless. You have delivered me from the entanglement of material life. So Lord बोल रहे हैं सनातन को कि देखो Krishna is so merciful that he has delivered you. He is
saved you from going to this Maharorva, this hell where animal eaters or people that engage in killing animals go, right? Because he was facilitating those things, right? So you would have gone there, but he has delivered you. He's so merciful. तो सनातन बोल रहे हैं कि मुझे तो कृष्णा की मर्सी का नहीं पता, बट योर मर्सी अपॉन मी इज कॉजलेस. You have delivered me from the entanglement of material life, right? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे आए थे ना सनातन गोस्वामी, तो कि आपकी वजह से मैं डिलीवर हो जाऊंगा. तो कभी भी ये this is the mood of a devotee. He does not think that he can get access to Krishna or Krishna's mercy directly. He always thinks that I can, if I can get mercy of my master, spiritual master, or other Vaishnavas or other devotees, then I may be able to get the mercy of Krishna. But I do not have direct access to the mercy of Krishna. है ना? इस तरीके से बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी. क्योंकि कोई समझेगा ये क्या लिखा है कि आई डू नॉट नो द मर्सी ऑफ कृष्णा. इज ही डिराइडिंग कृष्णा? नो, ही इज सेइंग दैट कृष्णा तो बहुत हाई गोल है, उनकी मर्सी तो मुझे पता नहीं कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, पर आपकी मर्सी मिल गई, उससे मुझे कृष्णा की मर्सी मिल सकती है. आपकी मर्सी से मैं, मतलब मेरे लिए तो आप ही की मर्सी बहुत है टू get freed from this entanglement of material life, right? वैसे हम दूसरे डिवोटीज को भी इसी तरीके से समझते हैं कि जो हमारे से, इसलिए हम कहते हैं ना वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, कि जो ये वैष्णवस हैं, they can deliver these fallen souls. ठीक है ना? तो हम कृष्णा को डायरेक्टली एक्सेस या अप्रोच ही नहीं कर रहे, हम तो वैष्णवस की ग्रेस को, उनकी मर्सी को ही अप्रोच कर रहे हैं. Then the Lord asked, "How did you get free from custody? I understand that you were arrested." Sanatan then narrated the whole story of his release. The Lord then informed him, "I saw your two brothers and advised them to proceed towards Vrindavan." Lord Chaitanya then introduced Chandrasekhar and Tapan Mishra to Sanatan, and Tapan Mishra pleasantly invited Sanatan to dine with him. The Lord requested Chandrasekhar to take Sanatan to a barber and make him gentle, for Sanatan had grown a long beard, which Sri Chaitanya Mahaprabhu did not like. He asked Chandrasekhar to provide Sanatan not only with bath and clean shave, but with a change of clothes as well. तो उन्होंने उसको पूछा कि आप को तो अरेस्ट कर लिया था, फिर आप वहां से बाहर कैसे निकले उस कस्टडी में से? तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई सनातन ने. तो फिर लॉर्ड ने उनको बोला कि मुझे तुम्हारे जो दोनों ब्रदर्स हैं, राइट, रूप गोस्वामी एंड वल्लभ, उनको मैंने एडवाइस किया था कि उनको तो मैंने बोल दिया कि आप लोग, वो लोग मुझे पहले मिल चुके हैं, राइट, उनको मैंने बोल दिया कि आप लोग वृंदावन जाओ. और फिर उनकी खातिरदारी की गई सनातन गोस्वामी को की. उनको बोला कि इनकी बियर्ड क्लीन करो, जेंटल मैन बनाओ उनको, राइट, कपड़े चेंज ऑफ क्लोथ्स दो, नहाने को दो, शेव करने को दो, ऐसा बोला गया, खाने को दो. ऐसे तरीके से अच्छे से इनवाइट किया तपन मिश्रा एंड चंद्रशेखर ने. After Sanatan had bathed, Chandrasekhar offered him some good clothes. When Lord Chaitanya was informed that Sanatan had not accepted the new garments, but later accepted only some used garments from Tapan Mishra, he was very glad. The Lord went to Tapan Mishra's house for lunch and asked him to keep food for Sanatan. Tapan Mishra did not offer Sanatan food immediately. However, but after the Lord had finished eating, there were some remnants of his food, and those remnants were offered to Sanatan while the Lord took his rest. After resting, Lord Chaitanya introduced a Maharashtrian Brahman, a devotee of his, to Sanatan, and that Brahman invited Sanatan to accept lunch daily at his place as long as he remained in Benares. As long as I remain in Benares, I will beg from door to door, Sanatan said. But the Lord will be so good as to accept this invitation for daily lunch at your house. तो क्या हुआ कि उनको कपड़े दिए गए, लेकिन उन्होंने नए कपड़े नहीं लिए, उन्होंने पुराने कपड़े लिए. और उनको खाने के लिए बोला गया. तो तपन मिश्रा के हाउस में वो लोग खाना खा रहे थे, लेकिन उन्होंने एकदम से उनको खाना नहीं दिया. जो चैतन्य महाप्रभु के रेमनेंट्स हैं वो दिए खाने को, राइट, विच वी नो कि जो महाप्रसाद होता है, महाप्रसाद है ना, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंसी होती है,
we have heard in the pastimes of Narad Muni how he ate the remnants of the food that was eaten by the four Bhakti Vedantas that had come to his house, right? So then he was able to be to progress in his spiritual life. So इसी तरीके से सनातन गोस्वामी की spiritual life की progress के लिए भी they gave him remnants of the Chaitanya Mahaprabhu's food. So सब बोलते हैं कि भक्त पद धूलि, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त महाजल, भक्त पद जल, तीन महाबल. तो तीन चीजें हो गई. ये तीनों में महाबल होता है. बल कैसा? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. स्पिरिचुअल बल होता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है इन तीन चीजों में. किन तीन चीजों में? भक्त पद जल, और भक्त भक्त अवशेष, भक्त पद धूलि. तीन चीजों में. भक्त के लोटस फीट की जो डस्ट होती है, उनका जो खाया हुआ रेमनेंट्स होते हैं, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त पद धूलि, और भक्त महाजल जो उनके पैरों को वाटर टच करता है, चरणामृत बन जाता है वो. तो इस तरीके से उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है. तो उन्होंने वो फूड सनातन गोस्वामी को दिया. और फिर उन्होंने एक ब्राह्मण से इनको इंट्रोड्यूस कराया कि आप इनके साथ रह सकते हो या इनके साथ लंच कर सकते हो रोज. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बनारस में जितने भी दिन रहूंगा मैं डोर टू डोर बेक करके खाना खाऊंगा, लेकिन लॉर्ड जो है वो आपके घर खा सकते हैं. Lord Chaitanya was very much pleased by this behavior of Sanatans, but he noticed the valuable blanket that had been given to him by his brother-in-law while Sanatan was en route to Banaras. Although Lord Chaitanya did not say anything about the blanket, Sanatan understood that he did not approve of such a valuable garment on his body, and therefore Sanatan decided to get rid of it. He immediately went to the bank of the Ganges, and there he saw a mendicant washing an old quilt. When Sanatan asked him to trade the old quilt for this valuable blanket, the poor mendicant thought that Sanatan was joking with him. "How is this?" the mendicant replied. "You appear to be a very nice gentleman, but you are mocking me in this unmannerly way." "I am not joking with you," Sanatan informed him. "I am very serious. Will you kindly exchange your torn quilt for this blanket?" Finally, the mendicant exchanged his torn quilt for the blanket, and Sanatan returned to the Lord. "Where is your valuable blanket?" the Lord immediately inquired. Sanatan informed him about the exchange, and the Lord loved him for this and thanked him. "You are intelligent enough, and you have now exhausted all your attraction for material wealth." In other words, the Lord accepts a person for devotional service only when he is completely free from all material possessions. The Lord then told Sanatan, "It would not look good for you to be a mendicant and beg from door to door with such a valuable blanket on your body. It is contradictory, and people would look on it with abhorrence." So, ये पास्ट टाइम बहुत फेमस है, इसीलिए आई वाज रेफरिंग बिफोर कि ये ब्लैंकेट दिया है उनके ब्रदर इन लॉ ने रास्ते में. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये सिग्निफिकेंस है जो भी आपने सुना. तो देखिए कैसे सनातन गोस्वामी समझ गए चैतन्य महाप्रभु का मूड. चैतन्य महाप्रभु ने उनको कुछ बोला नहीं. He did not criticize him or told him to get rid of the blanket, but Sanatan Goswami understood. तो ऐसे कितनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ जाती है जब हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर का मूड समझ सकते हैं, या दूसरे वैष्णवर्स और डिवोटीज या जो हमारे काउंसलर्स हैं, हमसे सुपीरियर्स हैं, हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को, कई बार सटल इंस्ट्रक्शन होती हैं, कई बार वो भी समझ लें अगर, तो हम कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं लाइफ में. लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हमारे में इतनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं होती. लेकिन सनातन गोस्वामी वाज नॉट लाइक दैट. तो वो उनके आंखों ही से ही समझ गए कि उनको ये ब्लैंकेट ठीक नहीं लग रहा. तो उन्होंने जाके वो एक्सचेंज कर लिया है फॉर अ ओल्ड क्विल्ट. और जब वो वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए और उनको बोला कि देखो, तुम अगर ऐसे डोर टू डोर जाते वो इतना बड़ा ब्लैंकेट, सुंदर सा वैल्यूएबल ब्लैंकेट लेके, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता. और यही है अल्टीमेटली, राइट, कि हमें अपनी सारी जो मटेरियल पोजेशंस है उनके लिए, ऐसा नहीं कि उनको दे देना है, लेकिन उनके लिए अट्रैक्शन या अटैचमेंट जो है वो खत्म करनी है ना. उसको मटेरियल पोजेशंस को एक्वायर करने की, इकट्ठा करने की जो टेंडेंसी है, प्रोपेंसिटी है, उसको धीरे धीरे खत्म करना है. या अगर कुछ है भी तो उसको लॉर्ड की सेवा में कैसे यूज करना है वो देखना है, और अपनी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अटैचमेंट जो है वो खत्म करनी है. तो जब वो खत्म हो जाती है तभी फिर
कृष्णा आपको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें ऐसा लिखा है, राइट? लॉर्ड एक्सेप्ट्स अ पर्सन फॉर डिवोशनल सर्विस। तो इसीलिए तो क्वीन कुंती भी बोलती है ना अपनी प्रेयर्स में कि जिसके पास सब कुछ है ना, ब्यूटी है, वेल्थ है, इंटेलिजेंस है, हाई बर्थ है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभिर ईधमान मधा पुमान नए भारतीय अभिधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरम, कि वो आपको नहीं पहुंच पाएगा आप तक जब तक आप उसको अकिंचन नहीं कर दोगे। अकिंचन मतलब कि वो उसके लिए मटेरियल पोजेशंस का टेस्ट खत्म हो जाए, है ना, उसकी हैंकरिंग खत्म हो जाएगी जब, तब वो आपको अप्रोच कर पाएगा, आप तक पहुंच पाएगा। इसलिए जो लोगों को बहुत जन्म होता है, ऐश्वर्य होता है, इंटेलिजेंस होती है, श्री वेल्थ होती है, वो आपको अप्रोच नहीं कर पाते विद गुड सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। सिंसियरिटी से नहीं कर सकते अप्रोच, ठीक है ना। तो किंचन हो जाते हैं, जैसे कि अवंती ब्राह्मण का पास टाइम आता है। अवंती ब्राह्मण की स्टोरी आपने देखी होगी या सुनी होगी, वो भागवतम में आती है कि कैसे हाउ ही वाज रेंडर्ड अ किंचन आल्सो एंड देन ही वाज एबल टू अप्रोच लॉर्ड। उसके बाद क्या आता है, लेट्स रीड। Whatever I'm doing to become free from material attachment is all your mercy, Sanatan replied. The Lord was very much pleased with him and they discussed spiritual advancement. Previous to this meeting between Lord Chaitanya and Sanatan Goswami, the Lord had met a householder named Ramanand Rai. At that meeting, which is discussed in a later chapter, Lord Chaitanya asked Ramanand Rai questions and Ramanand replied as if he were the Lord's teacher. However, in this case, Sanatan put questions to the Lord and the Lord answered them. Okay. तो ये पहले ये लाइन में ये लिखा है कि सनातन गोस्वामी ने बोला कि जो मेरी अटैचमेंट खत्म हो रही है टू द मटेरियल पोजेशंस, वो आपकी वजह से है, इट इज फ्रॉम योर मर्सी। और फिर उनकी आपस में बहुत डिस्कशंस हुई। सनातन गोस्वामी ने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जिनको लॉर्ड ने आंसर किया और लॉर्ड उससे बहुत प्लीज थे। उन्होंने उनको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी चैतन्य महाप्रभु को, सॉरी सनातन गोस्वामी को। तो एक इसमें ये बताया गया है कि इस मीटिंग से पहले, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की मीटिंग से पहले एक डिवोटी से मिले थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। उनका नाम था रामानंद राय। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है जो भी आएगा आगे, जिसके बारे में लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। रामानंद राय कौन है? रामानंद राय एक हाउस होल्डर है इन दिस गॉड लीला, लेकिन वो कौन है इटर्नली? वो मिक्स्ड इनकारनेशन मानी जाते हैं ऑफ टू पीपल, एटलीस्ट टू पीपल। एक तो अर्जुन, ठीक है, एक्चुअली थ्री पीपल्स, आई एम सॉरी, थ्री पीपल। एक तो अर्जुन, एक विशाखा सखी, ठीक है, और एक उनके ग्वाले गोपा फ्रेंड थे कृष्णा के, वो। तो ये तीन लोगों की मिक्स्ड इनकारनेशन है रामानंद राय। अब भगवत गीता में क्या होता है कि अर्जुन उनसे क्वेश्चन पूछता है और कृष्णा आंसर करते हैं, लेकिन जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की डिस्कशन होती है तो उसमें चैतन्य महाप्रभु, इवन दो बीइंग अ सन्यासी एंड सच एन एक्सॉल्टेड फेमस सन्यासी, he is asking questions to this householder devotee Ramanand Rai. तो कृष्णा अर्जुन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और अर्जुन आंसर कर रहा है, उसको बोलते हैं राय रामानंद संवाद, ठीक है, उसको बोलते हैं राय रामानंद संवाद। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल बातें हैं जो हम आगे कभी करेंगे। वो विशाखा सखी कैसे हैं वो भी आता है, वो गोपा फ्रेंड कैसे हैं वो भी आता है, पर अर्जुन कैसे हैं वो ऐसे आता है कि इसमें भगवत गीता से ऑपोजिट स्टाइल में डिस्कशन हो रही है और चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी रामानंद राय की सारी डिस्कशन आराम से बैठ के सुन रहे हैं। वो बता रहे हैं और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय उनको आंसर कर रहे हैं, ऐसे था, ठीक है। तो ये बातें अभी आगे आएंगी। The instructions of Lord Chaitanya to Sanatan Goswami are very important for people in general. The Lord taught him the process of devotional service, which is the constitutional occupation of every living entity. Because this is so, it is every man's duty to advance in spiritual science. Many subjects were thoroughly discussed in the talks between Lord Chaitanya and Sanatan Goswami. Due to the mercy of Lord Chaitanya, Sanatan was able to put important questions before him, and these questions were replied to properly.
The meeting of Sanatan Goswami and Lord Chaitanya teaches us that to understand spiritual subject matters, one must approach a spiritual master like Lord Chaitanya Mahaprabhu and make submissive inquiries. This is confirmed in the instructions of the Bhagavad Gita 4.34, where Lord Krishna says that one should approach a man of authority and learn the spiritual science from him. तो ये जो डिस्कशन है चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। ये अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पूरा साइंस ऑफ गॉड एंड प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस सनातन गोस्वामी को सिखाया। एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल और कंडीशनल, ये दो वर्ड्स होते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब तो होता है कि जिसमें जो हमारी इनहेरेंट स्पिरिचुअल नेचर है, और कंडीशनल होता है जो हमें इस बॉडी के वजह से आइडेंटिफिकेशन मिली है, जो उसके रिलेटेड हम ड्यूटीज करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी इटर्नल नेचर है उसके लिए हम ड्यूटीज करते हैं। तो डिवोशनल सर्विस के बारे में या गॉड के बारे में सीखना हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशन है। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, तो ये हमारा नित्य स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो इसीलिए हमारी ड्यूटी है स्पिरिचुअल साइंस में एडवांस करना। तो इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस किए गए दोनों के टॉक्स में, और सनातन गोस्वामी वाज एबल टू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस टू चैतन्य महाप्रभु बाय महाप्रभु's मर्सी एंड दे वर रिप्लाइड टू प्रॉपर्ली। ठीक है, और इसी तरीके से हमें भी प्रॉपर मास्टर को अप्रोच करके प्रॉपर क्वेश्चंस पूछने चाहिए और उनको सर्व करना चाहिए और स्पिरिचुअल नॉलेज उनसे लेनी चाहिए। तो इन दिस केस हम प्रभुपाद से ले रहे हैं सारी स्पिरिचुअल नॉलेज, और हमारे जो भी मेंटर्स हैं या जो हमारे प्रभुपाद की लाइन में डिवोटीज हैं उनसे ले रहे हैं। So this is the end of chapter 2 of teachings of Lord Chaitanya. Please let me know if there are any questions. I will post chapter 3 as well very soon. We will do some reading in person also. Thank you for listening. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय दधालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा, हरि बोल।